So, very good evening, all the participants. Today, we'll discuss the provisions regarding Companies Act. Let us take up compromise arrangement and amalgamation first. One of the very important topics on which normally they ask questions, and sometimes there is a case study also. I have already shared this PPT with you. I hope my screen is visible. Is it visible? Sir, Yes. So, before we start the session, please tell me a few questions. Who will approve the scheme of compromise arrangement or amalgamation? NCLT. NCLT. And who can propose the scheme? Whether a group of shareholders can propose the scheme? Who can file an application for compromise or arrangement? Company can file. Whether creditor can file? Yes. Whether members can file? Yes. And in the case the company is being wound up, it can be filed by a liquidator also. So what is this process of compromise or arrangement? But before we go through this, let us see this one pager. This is one page summary of section 230 to 240. Section 230 says that NCLT can order meeting on application by company, creditors, members, liquidator. Objection to this scheme can be made by those holding 10% of the shareholders' shares or 5% of the outstanding debt. And there could be a dispensation of meeting of the creditors if it is confirmed by 90% of the creditors in value. So it depends upon the tribunal. So this is in brief section 230. Section 231 says that NCLT has the powers to supervise or give directions regarding the scheme. Section 232 says regarding the mergers and amalgamations, and in case there is a merger and amalgamation, the fees for the authorized capital is adjustable. Okay. 233, merger of small companies or wholly owned subsidiaries companies, it can be allowed in a summary manner. 234 says merger with foreign company has to be as per the RBI guidelines. Section 235 says power to acquire share of dissenting from the scheme in case 9/10 in value approve of the scheme. 236 says purchase of minority shareholding at valuation. 237, power of the central government to provide for amalgamation in public interest. 238 says registration of offer of a scheme involving transfer of shares. 239, preservation of books. And 230 talks of liability of officers for offences prior to amalgamation, that is to continue even after amalgamation. So this is in brief the scheme. Okay. Process. What is the process? Process of compromise arrangement. It could be between a company and its creditors or any class of them. It could be between a company and its members or any class of them. Who can file the application for compromise arrangement? An application for compromise arrangement can be filed with the tribunal by the following: company, creditor, members of the company, in case of a company which is being wound up by the liquidator. Now, whether there is a possibility of joint application, so where more than one company is involved in a scheme, such application may, at the discretion of such companies, be filed as a joint application. Okay. Now, what are the conditions? Let us understand the process in brief. Conditions for serving of application in situation where application is not served by the company. Basically, suppose the application is not moved by the company, then the company will not come to know. Suppose a creditor files a scheme. Hai na? So in that case, there is a mandate that they have to be given notice of the scheme. Where the application is not filed by the company, then at least 14 days before the date fixed for the hearing of the notice by the tribunal, a copy of the notice of admission and of the affidavit shall be served on the company or where the company is being wound up on its liquidator. The applicant shall also disclose to the tribunal in the application under Sub-Rule 1 the basis on which each class of members or creditors have been identified for the purpose of approval of the scheme.
What is the format of application? Application to the tribunal for compromise arrangement will be submitted in form number NCLT 1 along with the following documents: a notice of admission in form number NCLT 2, an affidavit in form number NCLT 6, a copy of scheme of compromise arrangement, a disclosure in form of affidavit including the following points: all material facts relating to the company, such as the latest financial position of the company, the latest auditor's report on the accounts of the company, and the pendency of an investigation or proceedings against the company. Hmm. Pendency of an investigation or proceedings against the company, reduction of share capital of the company, if any, included in the compromise or arrangement. So these are the things to be attached. Any scheme of corporate debt restructuring. So they normally set a question of this point. So if there is any scheme of corporate debt restructuring, then what is the percentage? It has to be consented to by not less than 75% of the secured creditors in value. One, including a creditor's responsibility statement in the form number CAA1, safeguards for the protection of other secured and unsecured creditors, a report by the auditor that the fund requirements of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimates provided to them by the board, where the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the Reserve Bank of India, a statement to that effect, a valuation report in respect of the shares and the property and all assets, tangible and intangible, movable and immovable, of the company by a registered valuer. हाँ नीलो. Where the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the Reserve Bank of India, a statement to that effect. Evaluation report in respect of the shares and the property and all assets, tangible and intangible, movable and immovable of the company by a registered valuer. So all these things are to be enclosed. अगर कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है तो उसके अंदर ये चीजें लगानी है. The applicant shall also disclose to the tribunal in the application the basis of identification of each class of members or creditors for the purpose of approval of the scheme. Now, calling of a meeting by the tribunal. Upon hearing of the application, tribunal shall, unless it thinks fit for any reason to dismiss the application. So, tribunal may dismiss the application also. So, it will give such directions or orders as it may think necessary in respect of the meeting of the creditors or class of creditors or the members of class of members as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as prescribed in as follows. First, fixing the time and place of the meeting or meetings, appointing a chairperson and scrutinizer for the meeting or meetings to be held as the case may be, and fixing the terms of his appointment including remuneration, notice to be given of the meeting or meetings and the advertisement of such notice. Determining the values of the creditors or the creditors or members of any class as the case may be, whose meetings have to be held. Determining the values of the creditors or the creditors or members of any class as the case may be, whose meetings have to be held. Notice to be given to sectoral regulators or authorities. The time within which the chairperson of the meeting is required to report the result of the meeting to the tribunal, and such other matters as the tribunal may deem necessary.
Now notice. Notice will be given. The notice of the meeting pursuant to the order of tribunal to begin in form number CAA2. Okay. Details of the order of the tribunal directing the calling, convening and conducting of the meeting. Date of the order and date, time and venue of the meeting. Then details of the company, including SIN number or GLN number, PAN number, name of the company, date of incorporation, type of the company, whether public or private or one person company, a registered office address and email address, summary of main object as per the memorandum of association and main objects carried on by the company. Disclosure about effect of compromise and arrangement on material interests of directors, KMP and debenture trustee. Details of board meeting. The name of the directors who did not vote or participate on such resolution. The name of the directors who voted against the resolution. And the name of the directors who voted in favor of the resolution. The date of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors. Okay. Explanatory statement disclosing details of the scheme of compromise or arrangement, including parties involved in such compromise or arrangement. In case of amalgamation, merger, appointed date, effective date, share exchange ratio, and other considerations, if any. Summary of the valuation report, including basis of valuation and fairness opinion of the registered valuer, if any, and the declaration that the valuation report is available for inspection at the registered office of the company. Details of capital or debt restructuring, rationale for the compromise arrangement, benefits of the compromise arrangement as pursued by the board of directors to the company, members, creditors, and others as applicable, amount due to unsecured creditors. Okay. Then disclosure about the effect of compromise arrangement on KMP, directors, promoters, non-promoter members, depositors, creditors, debenture holders, deposit trustee and debenture trustee, employees of the company. Okay. Then below mentioned details. Investigation or proceedings, if any, pending against the company, details of the approval, sanctions or no objections, if any, from the regulatory or any other governmental authorities required, received or pending for the proposed scheme of compromise or arrangement, a statement to the effect that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting, either in person or by proxies, or where applicable by voting through electronic means. Such other information or documents as the board or management believes necessary and relevant for making decision for or against the meeting. Then advertisement of notice of meeting. The notice of the meeting shall be advertised in form number CAA2, at least in one English and one vernacular language newspaper. It shall indicate the time within which the copies of the compromise arrangement shall be made available to the concerned persons free of charge from the registered office of the company. Such newspaper shall be published on the website of the company at least 30 days before the date fixed for the meeting as directed by the tribunal. In case of listed company, such a notice and other document shall also be published on the website of SEBI and stock exchange where securities of the company are listed. Notice to statutory authorities. Notice in form number CAA3 along with copy of scheme of compromise and arrangement, the explanatory statement and the disclosures mentioned in point number 5 shall also be sent to the following: central government, registrar of companies, income tax authorities in all cases, RBI, SEBI, Competition Commission and the stock exchange as may be applicable, other sectorial regulators or authorities as required by the tribunal. Notice shall be sent to the office of the authority after sending of notice to members or creditors of the company by registered post or by speed post or by courier or by hand delivery. Representation by authorities. If they want to make any representation, they can make a representation within a period of 30 days from the date of receipt of such notice. Copy of such representation shall simultaneously be sent to the concerned companies. In case of no representation within 30 days, then it will be presumed that the authorities do not have any representation. Voting. The persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either themselves or through proxies or by postal ballot to the adoption of the compromise arrangement within 1 month from the date of receipt of such notice. Okay. Then right of objections. Any objection to the compromise arrangement shall be made only by the persons holding, ये percentage भी important है, ठीक है, persons holding not less than 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than 5% of the total outstanding debt as per the latest audited financial statement. Other conditions for compromise and arrangement. Copy of compromise arrangement to be furnished by the company. The company on the requisition of the creditors or members entitled to attend meeting shall furnish a copy of the scheme of compromise arrangement and a copy of statement required to furnish in section 232C within 1 day of requisition.
ठीक है. The report of the result of the meeting shall be in form number CAA4 and shall state accurately the number of creditors or class of creditors or the number of members or class of members, as the case may be, who were present and who voted at the meeting either in person or by proxy, and where applicable, who voted through electronic means, their individual values and the way they voted. ठीक है. Report of the result of the meeting by chairperson. The chairperson of the meeting shall, within the time fixed by the tribunal or where no time has been fixed, within 3 days after the conclusion of the meeting, ये भी important है. ठीक है. Submit a report to the tribunal on the result of the meeting in form number CAA4. Binding nature of approval. Where at a meeting, a majority of persons representing 3/4 in value of the creditors or class of creditors or members of class of members, as the case may be, voting in person or by proxy or by postal ballot, agree to any compromise or arrangement, and if such compromise or arrangement is sanctioned by the tribunal by an order. ठीक है. तो कितना अप्रूवल चाहिए? 3/4. The same shall be binding on the company, all the creditors or class of creditors or members of class of members, of the case may be, or in the case of a company being wound up, on the liquidator and the contributors of the company. ठीक है. Third step है order of tribunal. After completion of the voting and report of result of the meeting by the chairman to the tribunal, next step will be confirmation of compromise arrangement from the tribunal. Then petition for confirming compromise or arrangement. The company shall, within 7 days of the filing of the report by the chairperson, present a petition to the tribunal in form CAA5 for sanction of the scheme of compromise or arrangement. The petitioner will pray for the appropriate orders and directions from the tribunal. Right of creditors to file the petition. Where the company fails to present the petition for confirmation of the compromise or arrangement as aforesaid, it shall be open to any creditor or member, as the case may be, with the leave of the tribunal to present the petition, and the company shall be liable for the cost thereof. Okay. Then notice of hearing by the tribunal. The tribunal shall fix a date for the hearing of the petition. Legal responsibility of the tribunal. The notice of the hearing of the petition shall also be served by the tribunal to the objectors or to their representatives, to the central government and other authorities who have made representation under Rule 8 and have desired to be heard in their representation. Then publication of the notice. The notice of the hearing shall be advertised in the same newspaper in which the notice of the meeting was advertised, or in such other newspaper as the tribunal may direct, at least 10 days before the date fixed for the hearing. Okay. Order by the tribunal. Where the tribunal sanctions the compromise arrangement, the order shall be in form number CAA6. The order shall include such directions in regard to any matter or such modifications in the compromise arrangement as the tribunal may think fit to make for the proper working of the compromise or arrangement. Filing of the order of the tribunal. The order of the tribunal shall be filed with the registrar by the company within a period of 30 days of the receipt of the copy of the order, or such other time as may be fixed by the tribunal. So this period is also important. Okay. Power of the tribunal. If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanctioned under section 230 cannot be implemented satisfactorily with or without modifications, and the company is unable to pay its debts as per the scheme, it may make an order for winding up of the company, and such an order shall be deemed to be made an order under section 273. ठीक है. ये शेड्यूल ऑफ फीस है. एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज 5,000 फीस है. Where application by dissenting shareholders 1,000. Appeal against the order of the registrar refusing to register 2,000 rupees. These are the various forms. Creditors responsibility statement CAA1 के अंदर है. CAA2 में notice and advertisement of notice of the meeting of creditors. CAA3 notice to central government regulatory authorities. CAA4 report of result of the meeting by chairperson appointed by the NCLT. CAA5 petition to sanction compromise or arrangement. CAA6 order on petition. CAA7 order under section 32. CAA8 statement to be filed with the registrar of companies within 210 days from the end of each financial year. CAA9 notice of the scheme inviting objections or suggestions. CAA10 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. CAA11 एक बार ये CAA8 देख लेते हैं. CAA8 में 210 डेज ही है क्या?
ये क्या चीज है? रूल नंबर 21। एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के रूल्स देख लेते हैं एक बार। ये रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर है इसको 21। 21 क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 232, एवरी कंपनी, हाँ, विद इन 210 days। हाँ, CAA, ठीक है। CAA 9 हो गया, नोटिस ऑफ द स्कीम इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस। CAA 10, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। CAA 11, नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर। CAA 12, लेकिन फॉर्म नंबर नॉर्मली वो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। एक मिनट। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस has validity of 1 year, and whenever you are issuing any securities within that period, so you have to issue form PAS2, which will be the form for information memorandum. Red herring prospectus. This is a prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included therein. It may be issued prior to the issue of a prospectus and should be filed at least 3 days prior to the opening of the subscription listed offer. ठीक है? And obligations and variations, they are same as applicable to prospectus, and any variation should be highlighted in the prospectus. Allotment of securities. तो अमाउंट सब्सक्राइब कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस? ठीक है। अमाउंट पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, दैट शुड बी द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन। मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर रिसीविंग द अमाउंट सब्सक्राइब्ड, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना है? 30 days। पीरियड फॉर रिटर्निंग मनी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कितना है? 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड कितना है? 15% पर एनम। मैंने रूल नंबर भी दे दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। इफ देर इज ए पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 39(3) और 4, तो 1000 rupees ईच डे टिल द डेट द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख विच एवर इज लेस। फॉर्म फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको PS3 में फाइल करना है विद इन 30 days। रेट ऑफ कमीशन पेएबल टू एनी पर्सन कंसर्न विद सब्सक्रिप्शन, 5% इन केस ऑफ सिक्योरिटीज है, एंड 2.5% इन केस ऑफ डिवेंचर्स एज पर आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये चार्ट से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 बोलता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर। सो इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर, information application to the stock exchange has to be made mentioning the name of the stock exchange, and you have to maintain separate bank account. ठीक है। There is a penalty for non-compliance. Penalty for the company is 5 lakhs to 50 lakhs, and penalty on officer is fine of 50,000 to 3 lakhs, and imprisonment up to 1 year or both. Global depository receipts. Conditions for the issue. और कौन सी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है? बाहर वाली कंपनी इंडिया में रिसीट्स इशू कर रही है। ग्लोबल डिपॉजिटरी एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, है ना? और अमेरिकन इन अमेरिका बाय इंडियन कंपनी। सेक्शन 44 बोलता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 45 कहता है एवरी शेयर हैज टू बी ए डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है। सेक्शन 46, सर्टिफिकेट अंडर कॉमन सील हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और ए डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी वेर एवर अपॉइंटेड। इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा। ठीक है। सेक्शन 47 बोलता है कि वोटिंग राइट्स हैव टू बी इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल। ठीक है, इशूड नहीं, पेड अप कैपिटल के हिसाब से। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। सेक्शन 48 बोलता है वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स with 3/4 consent or by special resolution. 49, call for further share capital to be made on uniform basis. Section 50, company may accept in advance any all called amount without any voting rights. ठीक है। सेक्शन 51 बोलता है डिविडेंड किस बेसिस पर पेबल होगा? इट शैल बी पेबल ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कैपिटल। 52, प्रीमियम रिसीव्ड टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैन बी अप्लाइड। ये इस पे सवाल पूछ लेता है कि ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है
ये किस चीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है? इट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स बोनस इशू, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल और रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है। Section 53 talks of prohibition on issue of shares at a discount except to creditors in accordance with the statutory resolution plan or debt restructuring plan. पनिशमेंट किसमें? पनिशमेंट इसमें है पेनल्टी अप टू equal to the amount raised or rupees 5 lakhs, whichever is less, besides liability to refund the amount received along with interest at the rate of 12% per annum. Section 54. Section 54 talks of issue of sweat equity shares. So sweat equity shares can be issued if authorized by special resolution, specifying the number of shares, current market price, consideration if any, and classes of directors or employees. Besides this, to conform to SEBI regulations in case of listed shares and prescribed rules in case of unlisted shares. ठीक है। सेक्शन 55 बोलता है कि you can issue only redeemable preference shares and they can be issued for a maximum period not exceeding 20 years except in case of infrastructure projects. And redemption of these shares have to be made out of the profits of the company available for dividend and proceeds of a fresh issue made for such redemption. Should be fully paid up before redemption, nominal amount to be transferred to capital redemption reserve account and premium payable out of profits or securities premium account. ठीक है, ये redeemable preference shares के बारे में। Then section 56, transfer or transmission within 60 days based on the certificate instrument of transfer duly executed. Period कितना है? 2 months from date of incorporation in case of subscribers to the memorandum, 2 months in case of allotment, and 1 month in case of transfer. 6 months from date of allotment in case of allotment of debentures. Immediately in case of securities held with depository. ठीक है। 57, पेनल्टीज फॉर impersonation. तो फाइन है 1 लाख to 5 lakhs, imprisonment है 1 year to 5 years, 1 year to 3 years. ये impersonation क्या चीज है? सेक्शन 57। सेक्शन 57 बोलता है अगर कोई कहता है कि भाई मैं शेयर होल्डर हूं, वो शेयर होल्डर नहीं है, तो उसकी बात करता है 57। If any person deceitfully personates as an owner of any security or interest in a company or of any share warrant or coupon, ठीक है, and thereby obtains or attempts to obtain any such security or interest, तो उस केस में क्या पनिशमेंट है? ये वो है 58 बोलता है रिफ्यूजल टू रजिस्टर एंड द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील। ठीक है, यू हैव बॉट शेयर्स ऑफ ए कंपनी, द कंपनी रिफ्यूजेस टू रजिस्टर। तो पहले आपको देखना है कि प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको कितना टाइम पीरियड है? इंटीमेशन ऑफ रिफ्यूजल अगर रिसीव हुई है तो यू कैन फाइल एन अपील विद इन 30 डेज। अगर कोई इंटीमेशन आपको रिसीव नहीं हुई है रिगार्डिंग रिफ्यूजल तो यू कैन फाइल अपील विद इन 60 डेज इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अगर रिफ्यूजल रिसीव हुआ है तो 60 डेज का पीरियड है। अगर नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड देन पीरियड इज 90 डेज। ठीक है, एन अपील ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट टू ट्रांसफर विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, अगर उसके लिए पेनल्टी कितनी है? इम्प्रिजनमेंट है 1 year to 3 years और फाइन है 1 लाख to 5 lakhs। सेक्शन 59, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स टू बी डन विद इन 10 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, पेनल्टी ऑन कंपनी है 1 लाख to 5 lakhs, पेनल्टी ऑन ऑफिसर है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन 1 लाख to 3 lakhs और बोथ। सेक्शन 60 बोलता है कि इन एवरी कम्युनिकेशन यू हैव टू पब्लिश द डिटेल्स रिगार्डिंग ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, अदरवाइज पेनल्टी है 10,000 और ऑफिसर है 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। सेक्शन 61 बोलता है a limited company may increase its authorized capital and it may consolidate, subdivide, reduce its unissued share capital without change in voting power. Section 62 further issue की बात करता है। Further issue can be made to existing shareholders in proportion to the paid up capital. Then rights of renunciation of such offer in favor of another person if it is not disadvantageous to the shareholders. Employees को आप इशू कर सकते हो स्टॉक ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, सेक्शन 63 बोनस इशू यू कैन मेक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस पे सवाल पूछ लेता गया। एंड नॉट आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन, अदरवाइज कंप्लाइंट इन पेमेंट ऑफ एफडी, स्टैट्यूटरी ड्यूज एक्सेट्रा। तो ये सारी कंडीशंस हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स।
ठीक है, ये छोटा छोटा हमने लिखा हुआ है, लेकिन इतने से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये हमने बनाए थे लॉकडाउन में नोट्स बनाए थे मैंने खुद ही हाथ से, और फिर उनको टाइप करवाया था। सेक्शन 64 बोलता है कि नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन 30 days ऑफ सच ऑल्ट्रेशन along with the altered memorandum. Penalty on company and officer 1000 each day और 5 lakhs which average less. सेक्शन 65 क्या बोलता है कि अनलिमिटेड कंपनी टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड कंपनी। ठीक है, नो इंक्रीज पार्ट टू बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ share capital. So tribunal may approve reduction after giving notice to central government, SEBI, registrar, creditors, etc. And no reduction is possible if the company has defaulted in repayment of deposits or interest. ठीक है, सेक्शन 67 restrictions on purchase by company or giving of loans by it for purchase of its shares. But there are certain exceptions for this. Exceptions क्या है? Banking company, NBFC companies, या लोन्स टू एम्प्लॉयज यू कैन गिव नॉट एक्सीडिंग 6 months सैलरी और वेजेस। ठीक है, और पेनल्टी क्या है फॉर वायलेशन? फाइन है 1 लाख टू 25 lakhs, और ऑफिसर के लिए इंप्रिजनमेंट अप टू 3 lakhs, फाइन है 1 लाख टू 25 lakhs। ठीक है, सेक्शन 68 पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोसीड्स ऑफ द इशू, नो बायबैक unless it is authorized by the articles, unless special resolution is passed, and ratio of 2:1 of the debt equity is to be maintained, and further इसमें 10% 25% का क्राइटेरिया है। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में है। देन सेक्शन 69 ट्रांसफर ऑफ सर्टन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ओन शेयर्स परचेज्ड। सेक्शन 70 बोलता है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, through subsidiary, through investment company, in case of default in repayment of deposits, unless defect removed and 3 years have elapsed. ठीक है, सेक्शन 71 सेक्शन 71 टॉक्स ऑफ डिबेंचर्स कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू इज टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, नो वोटिंग राइट्स कैन बी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स, equivalent amount has to be transferred to debenture redemption reserve account, appointment of debenture trustee in case invitation is to more than 500, and debenture trustee to file petition before tribunal if he feels that the company assets are insufficient to pay. ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इज पनिशेबल, ऑफिसर के ऊपर इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 years, फाइन हो सकता है 2 lakhs to 5 lakhs। सेक्शन 72 टॉक्स ऑफ पावर टू नॉमिनेशन ऑन डेथ। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि जो शेयर होल्डर है वो सिंगल है या जॉइंट होल्डर है। ठीक है, सिंगल होल्डर है तो नॉमिनी के पास चले जाएंगे। ठीक है, एंड इन केस नॉमिनी इज अ माइनर एनी अदर पर्सन टिल मेजॉरिटी ऑफ द माइनर, और जॉइंट होल्डर में नॉमिनी टू बिकम एंटाइटल्ड ऑन द डेथ ऑफ ऑल द जॉइंट होल्डर्स। चैप्टर 5 इसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी, सेक्शन 73 टू 76A। इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछ लेता है। Prohibition on acceptance of deposits from public except by banking companies or NBFCs. ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, तो उस केस में अगर इफ यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स तो उस केस में क्या है कि यू हैव टू इशू सर्कुलर टू द मेंबर्स इंडिकेटिंग टोटल अमाउंट, credit rating has to be there, and amount due in respect of previous deposits if any you have to disclose. You have to file this circular with the registrar within 30 days before issue of circular, and depositing on or before 30th day of April minimum 20% of the amount of deposits maturing during the following financial year. ये 73 बोलता है। सेक्शन 74 ये पुराना सेक्शन था, अब आजकल यूज में नहीं है ये। सेक्शन 76 क्या बोलता है? सेक्शन 76 बोलता है कि सर्टेन कंपनीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, उनका कुछ नेटवर्थ का क्राइटेरिया है या टर्नओवर का क्राइटेरिया। नेटवर्थ होनी चाहिए 100 crores और मोर, या टर्नओवर होनी चाहिए 500 crores और मोर। ठीक है, उस केस में क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ एडिक्वेट सेफ्टी लेनी है आपको फॉर एवरी ईयर ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स, एंड कंपनी टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स विद इन 30 days ऑफ सच एक्सेप्टेंस। ठीक है, 76A क्या बोलता है? देयर इज अ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76। फाइन है 1 crore और डबल द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, मैक्सिमम है 10 crores, ऑफिसर इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 7 years,
और फाइन हो सकता है 25 lakhs to 2 crores. Registration of charges. Definition of charge. So charge means an interest or lien created on the property or assets of a company or any of its undertakings or both as security and includes a mortgage. ठीक है. अब ये चार्ज आपको रजिस्टर कितने दिन के अंदर करना है? तो देर इज अ ड्यूटी टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 days 30 days. एंड कंडोनेशन ऑफ डिले बाय द रजिस्ट्रार. ठीक है. अब क्योंकि ये पीरियड ये बाद में आया था अमेंडमेंट, तो उन्होंने ये कहा कि इफ दिस चार्ज हैज बीन क्रिएटेड बिफोर दिस अमेंडमेंट तो विद इन 30 days कंडोनेशन ऑफ डिले इज पॉसिबल एंड इफ द चार्ज इज क्रिएटेड आफ्टर अमेंडमेंट विद इन 60 days. ठीक है. सेक्शन 78 क्या बोलता है? सेक्शन 78 बोलता है कि where a company fails to register a charge, the person in whose favor the charge has been created may apply and recover the fees from the company. इसके लिए भी 30 days का ही पीरियड है. सेक्शन 80. सेक्शन 80 क्या बोलता है? देयर इज अ डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी. अगर किसी भी कंपनी का चार्ज रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो ये पब्लिक को नॉलेज मान लिया जाएगा कि सबको इसकी नॉलेज है. कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो ये नहीं कह सकता जी मुझे ये पता नहीं था, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है. तो इट इज ए डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज. ठीक है. सेक्शन 81. रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार ओपन फॉर इंस्पेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ फीस. ठीक है. सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज है विद इन 30 days. और मैक्सिमम कितना है? ये 90 days है या 300 days है? सेक्शन 82 एक बार चेक कर लेंगे. 300 days. हाँ. तो सेक्शन 82 बोलता है 300 days सर. हाँ, यस 300 days. ठीक है जी. तो कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद इन 30 days. मैक्सिमम है 300 days ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल. एंड रजिस्ट्रार में आस्क द होल्डर ऑफ द चार्ज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी विद इन मैक्सिमम 14 days. सेक्शन 83 क्या बोलता है? सेक्शन 83 बोलता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी. ठीक है. तो अगर कंपनी नहीं बताती है सेटिस्फेक्शन या रिलीज के बारे में तो रजिस्ट्रार खुद भी कर सकता है. एंड रजिस्ट्रार शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज विद इन 30 days ऑफ मेकिंग एंट्रीज. 84 क्या बोलता है? इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर बाय द पर्सन रिसीविंग सच अपॉइंटमेंट और बाय द पर्सन अपॉइंटिंग सच रिसीवर विद इन 30 days अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ सच अपॉइंटमेंट और ऑर्डर. ठीक है. किसी कंपनी का रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो 30 days के पीरियड में उसको इंटीमेट करना है. द पर्सन अपॉइंटेड शैल नोटिफाई द कंपनी एंड रजिस्ट्रार ऑन सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट. दोनों के बारे में इन्फॉर्म करना. 85 बोलता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस एंड ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस एंड टू अदर पर्संस ऑन पेमेंट ऑफ फीस. ठीक है. सेक्शन 86 बोलता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. कंपनी के ऊपर 1 लाख to 10 lakhs है. ऑफिसर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months है. और फाइन हो सकता है 25,000 to 1 lakh और बोथ. सेक्शन 87 रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस. ठीक है. इन केस ऑफ एनी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट और इनएडवर्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड द टाइम और अलाउ रेक्टिफिकेशन. तो फॉर्म CHG 1 है फॉर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अदर देन डिबेंचर्स. फॉर्म CHG 2 है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा. और CHG 9 में क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग चार्ज फॉर डिबेंचर्स. उसके बाद में कुछ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर देख लेते हैं. सेक्शन 88 to 122. तो यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रजिस्टर्स, यू हैव टू फाइल एनुअल रिटर्न्स, यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग्स एंड देयर आर सम रिक्विजिट्स फॉर कन्वीनिंग ए मीटिंग. तो ये सारी चीजें जो कवर्ड हैं ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कवर्ड है. Register of members you have to keep in MGT 1. Register of debenture holders you have to keep in MGT 2. Or foreign register you have to file within 30 days from the date of the opening of the register MGT 3. ठीक है. तो ये 3 फॉर्म है. डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट. ए पर्सन होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स. ठीक है. एंड मेंबर्स नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट और एनी चेंज इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट. तो जैसे फाइल डिक्लेरेशन दोनों को करना है, जो होल्डर है और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जिसका, दोनों को डिक्लेरेशन. शैल फाइल डिक्लेरेशन टू कंपनी विद इन 30 days एंड कंपनी टू फाइल रिटर्न टू ROC विद इन 30 days.
एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 टू 94 है। ये कई बार पूछ लेता है कि रजिस्टर्स और रिटर्न्स कहां पर रखने हैं आपको, रजिस्टर ऑफिस पे रखने हैं या वेयर मोर देन 1/10 मेंबर्स रिजाइड इफ अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो जहां पर मोर देन 1/10 मेंबर्स रिजाइड करते हैं वहां पर भी आप रजिस्टर और रिटर्न्स रख सकते हैं अपने, नॉर्मली रजिस्टर ऑफिस पर रखते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एक्टिविटीज, ये एनुअल रिटर्न के अंदर देना है आपको। शेयर्स, डिबेंचर्स, इंडेटेडनेस, चेंज सिंस प्रीवियस ईयर, मीटिंग्स, रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी, पेनल्टी और पनिशमेंट, शेयर्स हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारी डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न में देनी है। ठीक है, ये रजिस्टर ऑफिस आपको रखना है। मीटिंग्स के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या प्री रिक्विजिट है? बिफोर मीटिंग, ये कई बार नोटिस के बारे में पूछ लेता है, तो 21 क्लियर डेज नोटिस रिक्वायर्ड। क्लियर डेज का मतलब क्या है? तो डेट ऑफ डिस्पैच है और डेट ऑफ रिसीट को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो 21 डेज क्लियर नोटिस चाहिए, फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी है आपको। ठीक है, और नोटिस किस किस को भेजना है? मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर। ठीक है, फिर ड्यूरिंग मीटिंग में कुछ ध्यान में रखना है आपको, कोरम के बारे में, चेयरमैन कौन होगा, प्रॉक्सीज कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगा, रेजोल्यूशंस कैसे पास होंगी, और पोस्ट मीटिंग में फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे आपको सर्कुलेट करने हैं, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या है? जनरल मीटिंग हो सकती है, बोर्ड मीटिंग हो सकती है, क्लास मीटिंग हो सकती है। ठीक है, वेदर मीटिंग कैन बी हेल्ड विद शॉर्टर नोटिस, यस। सो एजीएम can be held with a shorter notice if 95% of the members who are entitled to vote they agree to it। ठीक है, और जो अदर मीटिंग्स है उसमें 95% ऑफ वोटिंग पावर। दोनों में फर्क क्या है? एजी में 95% ऑफ मेंबर्स है, नंबर के ऊपर डिपेंड है, और अदर मीटिंग्स में 95% ऑफ वोटिंग पावर है। ठीक है, फिर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर बीइंग डिस्कस्ड एट मीटिंग्स। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस डिफाइंड है, और इनके अलावा कोई भी बिजनेस जो है वो स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या है? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन। तो ये जो चारों बिजनेस है ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, एंड एनी बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द फोर साइडेड अबव इज स्पेशल बिजनेस। ठीक है, कोरम के बारे में कई बार सवाल पूछ लेता है। कोरम जो है प्राइवेट कंपनीज में 2 है और पब्लिक कंपनी में डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अप टू 1000 है तो 5 मेंबर्स हैं, 1000 1 to 5000 तो 15 है, अबव 5000 तो 30 मेंबर्स। ठीक है, एंड इफ quorum is not present within half an hour, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place, or such other date, time and place as the board decides। ठीक है, कंपनी टू गिव एटलीस्ट 3 days नोटिस टू मेंबर्स इंडिविजुअली और बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन बी सेलेक्टेड बाय आइदर शो ऑफ हैंड्स और बाय पोल। ठीक है, प्रॉक्सी के लिए फॉर्म नंबर MGT 11 है। प्रॉक्सी की क्या राइट्स है? ही कैन वोट ऑन अ पोल, ही हैज गॉट नो राइट टू स्पीक, ही कैन एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर अप टू 50 मेंबर्स और अप टू 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, if a single member holds more than 10%, his proxy cannot be a proxy for other members। मतलब एक जो सिंगल मेंबर है उसके पास 10% से ज्यादा की शेयर कैपिटल है, उसने एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, तो वो प्रॉक्सी फिर दूसरे मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी नहीं एक्ट कर सकता, मतलब ये। ठीक है, एंड प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग इज वैलिड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग कैन बी बाय शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी हो सकती है, एंड लिस्टेड कंपनी हैविंग मोर देन 1000 मेंबर्स। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वोटिंग बाय पोल है, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है। सर पोलिंग क्या है? वोटिंग में पोलिंग क्या है? पोस्टल बैलेट है तो ये सीक्रेट बैलेट से होगा। पोलिंग क्या है? पोलिंग में मतलब वहां पर पोल हो रहा है ना। ना, व्हाट्स द डिफरेंस पोलिंग एंड पोस्टल बैलेट का? देखिए, पोस्टल बैलेट में तो क्या होता है, पोस्टल बैलेट में वहां पर आते नहीं है। पोलिंग में क्या है, मेंबर जो बैठे वो पोल कर रहे हैं, अच्छा दोनों में फर्क ही है। अच्छा। जैसे 109 हम देखें, एक बार 109 पढ़ लेते हैं। तो 109 जो अगर मेंबर वहां आ गए,
मेंबर वहां आ हाँ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है नहीं, शो ऑफ हैंड है नहीं, तो वो वोटिंग बाय पोल, जैसे पार्लियामेंट वगैरह में नहीं होता, भाई पोल हो जाता 109, तो 109 क्या बोलता है, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन और शो ऑफ हैंड्स ए पोल में बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन। ठीक है, तो पोलिंग हो सकती है बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग on his own अच्छा motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in this behalf। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। और पोल मेंबर्स पार्लियामेंट भी में डिमांड कर पोलिंग ही सकते हैं, होता है, पोल मेंबर डिमांड पार्लियामेंट कर में सकते हैं पोलिंग होता है। नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इट्स अच्छा टोटल वोटिंग पावर, या फिर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एन एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड हैज बीन पेड अप। ठीक है, and in the case of any other company by any member or members present in person or by proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total voting power, तो 1/10 of total voting power या फिर 5 लाख रुपीज पेड अप, तो वो डिमांड कर सकते हैं पोल के। हाँ, ये भी लिखा हुआ है। एनुअल जनरल मीटिंग, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी। ठीक है, एजीएम कब होनी है आपकी, एजीएम इज टू बी हेल्ड एवरी ईयर, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और टाइम गैप कितना रहना है, नॉट टू एक्सीड 15 months। कभी छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है इनको, है ना। एंड रजिस्ट्रार में ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ 3 months फॉर स्पेशल रीजन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है। द बोर्ड में whenever it deems fit call an extraordinary general meeting of the company provided that an extraordinary general meeting of the company other than the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। ठीक है, the board shall at the requisition made by in the case of a company having a share capital such a number of members who hold not less than 1/10 of the share capital, and in case of company not having share capital such a number of members not less than 1/10 of the total voting power। ठीक है, तो they can call an extraordinary general meeting of the company within the period specified, ये रिक्विजिशन कर सकते हैं। The requisition made shall set out the matters for consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionist and sent to the registered office of the company। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इफ द बोर्ड, अब मान लीजिए लोग कह रहे हैं भाई मीटिंग कॉल करो, फिर भी बोर्ड कॉल नहीं कर रहा, तो क्या होगा। इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ए वैलिड रिक्विजिशन। ठीक है, वैलिड रिक्विजिशन के लिए हमने देख लिया कौन रिक्विजिट कर सकते हैं, 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल या 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, और अगर ये विद इन 21 days कॉल नहीं करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ए वैलिड रिक्विजिशन, सो they may proceed to call a meeting for the consideration of that matter on a day not later than 45 days from the date of receipt of such requisition। The meeting may be called and held by the requisitionist। ये requisitionist खुद बुला सकते हैं मीटिंग। ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन, और मीटिंग जो है इट शेल बी कॉल्ड एंड हेल्ड इन द सेम मैनर, एंड एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस वो जो है दे शेल बी रीइंबर्स्ड by the company and the sum so paid shall be deducted from any fees or other remuneration payable to such of the directors who were in default in calling the meeting। ये कंपनीज अकाउंट रूल्स है, इसके अंदर फॉर्म है कुछ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सीएसआर, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीएसआर में कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है, नेटवर्थ है 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। ठीक है, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सीएसआर कमेटी में कितने होंगे, 3 और मोर डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्पेंडिंग रिक्वायर्ड कितनी है, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। और कहां पर आपको स्पेंड करना है, ऑन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एक्टिविटीज विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में है
कि books of accounts to be prepared on accrual basis, double entry system, and there is an option to maintain accounts in electronic mode. Accounts to be kept for 8 years unless a lengthier period is directed by the central government. Accounts to be prepared as per Schedule 3. Reopening of accounts on the order of the court or tribunal. कई बार पूछ लेता है सवाल इसमें, है ना, रीओपनिंग कौन ऑर्डर कर सकता है. और टाइम पीरियड कब तक भेजना है आपको, नॉट लेस देन 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग. Time period for filing with the registrar within 30 days of the date of AGM. And suppose accounts are not adopted at the AGM, then also you have to file within 30 days of the date of the AGM. OPC को एक कॉपी फाइल करनी है विदिन 180 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कॉम्प्रोमाइज एमएल कमीशन हमने कर ही लिया. काफी काम कर लिया आज हमने. पनिशमेंट के ऊपर कई बार सवाल पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. देखिए कुछ तो पेनल्टीज हर सेक्शंस में प्रेस्क्राइब्ड है, हर चैप्टर में प्रेस्क्राइब्ड है. फिर ये कुछ जनरल टाइप की पेनल्टीज, ठीक है. सेक्शन 447, अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है 10 lakhs और मोर और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फ्रॉड है कितना. तो मिनिमम फाइन कितना होगा अमाउंट ऑफ फ्रॉड के बाद बराबर, मैक्सिमम फाइन होगा 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड इंप्रिजनमेंट होगी 6 months to 10 years. और अगर कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो उस केस में फाइन होगा मिनिमम फाइन अमाउंट ऑफ फ्रॉड के बराबर, मैक्सिमम फाइन है 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड और इंप्रिजनमेंट है 3 years to 10 years. अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो इंप्रिजनमेंट कैन बी अप 6 months to 10 years, ठीक है. और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम 3 years. And if amount of fraud is less than 10 lakhs or 1% of turnover, whichever is less, and does not involve public interest, तो उस केस में फाइन हो सकता है अप टू 50 lakhs और इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years, ठीक है. सेक्शन 449, सेक्शन 449 बोलता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and fine which may extend to 10 lakh rupees. Section 451, punishment in case of repeated default within a period of 3 years. So shall be punishable with twice the amount of fine for such offense in addition to imprisonment provided for that offense. Section 450, punishment where no specific penalty or punishment is provided. तो उस केस में कितना है फाइन होगा which may extend to 10,000 rupees and in case of continuing contravention 1,000 rupees for every day after the first day. Section 452 है punishment for wrongful withholding of property. तो shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees and to return the property or to undergo imprisonment which may extend to 2 years. Section 453 बोलता है punishment for improper use of word limited or private limited. तो इस केस में पनिशमेंट है फाइन कितना है which shall not be less than 500 rupees but may extend to 2,000 rupees for every day for which that name or title has been used. ये फॉर्म्स है एनसीएलटी के. कई बार इसके ऊपर सवाल पूछ लेता है एनसीएलटी रूल्स वगैरह के ऊपर. तो प्रेसिडेंट का क्या है, इसमें होता क्या है कि एनसीएलटी में होता है प्रेसिडेंट और एनसीएलटी में होता है चेयरमैन, ठीक है. इट मींस द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल. ही शैल बी ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years. He can hold office as such for a term of 5 years and he shall hold office as such until he attains the age of 67 years and other members attain the age of 65 years, ठीक है. जुडिशियल मेंबर, इसमें कुछ जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं और टेक्निकल मेंबर हो सकते हैं. तो जुडिशियल मेंबर जो है ही शैल बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years या एटलीस्ट 10 years ही हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ ए कोर्ट. Technical member, he should be a person of proven ability, integrity and standing, having special knowledge and experience of not less than 15 years in law, industrial finance, industrial reconstruction, industrial management or administration,
investment, accountancy, labor matters, or such other disciplines. Number of members not exceeding 11. Eligibility criteria of age 50 years and above. ये एनसीएलटी के बारे में. प्रिंसिपल बेंच इसकी होगी न्यू दिल्ली में. डिसीजन क्या होगा? If the members of a bench differ in opinion on any point, it shall be decided according to the majority. Amendment within 2 years from the date of the order. अपील इसके लिए होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को. डेज कितने हैं? विद इन पीरियड ऑफ 45 days. एंड नॉट फाइल अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 days. ठीक है. टाइम फॉर डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन. And in case petition or appeal is not disposed of within the period of 3 months, extension can be granted for the further period of not exceeding 90 days. Place of service of order in case of an order against a company. ठीक है. The registered office of the company. जहां पर registered office company का होगा वहां पर आपको service of order होगा NCLT का. ठीक है. Place of service of an order in case of an order against a person. ठीक है. अगर पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर है तो ये कहां पर सर्व होना है? वेयर द पर्सन कंसर्न वॉलंटरली रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस एंड पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. ठीक है. और ये जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है. विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी. एंड ए पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल, so as the case may be, they may either appear in person or authorize one or more CA, CS and cost accountants. ठीक है. Provision of Limitation Act they apply to proceedings or appeals. Sitting hours हैं from 10:30 to 1 PM and 2 PM to 4:30 PM, subject to any order made by the president. Office shall remain open on the day of main Indian festivals like Holi, Diwali, Eid, Christmas. ठीक है. Working hours. It shall remain open on all working days from 9:30 AM to 6 PM. Filing counter of the registry open time from 8:30 to 5 PM. ये जरा चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ऑफिस ओपन रहता है क्या दिल्ली ये होली वगैरह दिवाली पे? ये देखना पड़ेगा ये ठीक भी लिखा है कि नहीं. एक मिनट. इसमें क्या होता है? इसमें मेन बात यह है कि ऑफिस इज क्लोज फॉर हियरिंग. ठीक है. However, other business operations such as e-filing may still be available during these holidays. NCLT benches, which are quasi-judicial authorities dealing with corporate disputes, will resume normal functioning after these holidays. ठीक है. तो बेसिकली ई फाइलिंग इज अलाउड, बट ये है कि हियरिंग नहीं होती उस दिन, ये मतलब है. वर्किंग आवर्स हमने देख लिए. और फाइलिंग काउंटर ऑफ द रजिस्ट्री ओपन टाइम 10:30 to 5 PM. अथॉरिटी टू डिसाइड द कैलेंडर ऑफ डेज, ये प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल. लैंग्वेज and date on the appeal or petition, English or a translated copy in case in Hindi or other regional language. Number of copies 3 copies and shall deliver 1 copy to each of the opposite party.
Preservation of documents for a period of 5 years. Record of petitions or application and decisions shall be maintained by the registry for a period of 15 years after the passing of the final order. Documents shall be marked by the appellant or petitioner side as A series, by the respondent side as B series, and the tribunal exhibits as C series. Witnesses called by the applicant numbered as PWs. Witnesses called by respondents RWs. और certified copies फॉर्म INC 28. चलिए ये भी हो गया. उसके बाद में NCLAT. NCLAT में क्या है? इट इज हेडेड बाई ए चेयरपर्सन. NCLT में क्या है? प्रेसिडेंट. और NCLAT में चेयरपर्सन. And he shall hold office for a term of 5 years until the completion of age of 70 years. And he is eligible for reappointment for another term of 5 years and age of 67. ठीक. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर. NCLAT के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है. कितने दिन में करनी है? विद इन पीरियड ऑफ 60 days. And in case appeal is not filed by the Supreme Court, then within a further period not exceeding 60 days may be allowed. NCLAT shall not, while disposing of any proceeding before it. बात ये है कि अगर वो ऑप्शन फॉर लिक्विडेशन पूछ रहा है तो उसको सीधा ईओजी के पास जाना है. उसको सीओसी से क्या लेना? ये अप्रोच की जरूरत नहीं. प्लान आया नहीं, खत्म होगी बात. म्यूट कर लीजिए प्रवीण महतो जी. जी. वो भी मतलब वो ये अगर वो महतो जी म्यूट कर लीजिए अपने को. अगर नहीं अगर उसको लगा है चलिए ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. क्या ऑप्शन चलिए नेक्स्ट करते हैं. हाँ क्या कहता है? A party to any proceeding or appeal before the appellate tribunal, as the case may be, may either appear in person. हो ही गया हमारा. ये सब हमने कर लिया ना. चलिए स्पेशल कोर्ट्स ये एक बार देख लीजिएगा. वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 271 बोलता है व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी. सो इफ द कंपनी इज पास्ड a special resolution that the company shall be wound up. Company has acted against the interest of sovereignty, integrity of India, decency, morality. If on an application made by the registrar or any other person authorized by the central government by notification, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner or there was a fraud in formation or management of the company. So these are the grounds for winding up. ठीक है. सेक्शन 72 क्या कहता है? सेक्शन 272 बोलता है पिटिशन में बी फाइल्ड बाय द कंपनी, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेक्शन 274 बोलता है penal provision against the director or officer in case of failure to complete accounts and audit. ठीक है. So punishment is with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees or both. ठीक है. लिक्विडेटर कौन अपॉइंट हो सकते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. चलिए सेक्शन 277 बोलता है कि इंटीमेशन ऑफ पासिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इट हैज टू बी विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days. ये इसको आप देख लीजिएगा, बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें. ऑर्डर ऑफ पेमेंट इसमें थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. सबसे पहले रेवेन्यूज एंड टैक्सेस ड्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड पेबल विद इन
the period of 12 months, then all wages and salaries, then all accrued holiday remuneration, amount due on death or disablement of an employee, provident fund and pension fund, and expenses of investigation. Section 329 बोलता है कि if there is any transfer of property, movable or immovable, or any other delivery not made in the ordinary course of its business or in favor of purchaser, not to effect and shall be void against the company liquidator. ये इसको देख लीजिएगा, वाइंडिंग अप। इसके बाद मैंने ना कंपैरिजन किया है कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो दिस आल्सो यू कैन सी। ये फिर एलएलपी के ऊपर है, ये कल करते हैं ना, आज इतना ही करते हैं, काफी नहीं तो ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के ऊपर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप, या आपको कुछ और इनपुट्स हो, या आप अपना कुछ इसमें अगर आप दिन आपने कुछ अपने नोट्स बना रखे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ जी, क्यों मंजीत जी, आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इसमें? आपने बताया है वो ठीक है, वो उसमें कुछ इसमें, क्योंकि मैंने अभी कंपनी लॉज के इसके क्वेश्चन ही देखे हैं हम जो आते हैं। ओके ओके। हाँ जी हाँ हाँ, नहीं ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ना हमारी, ये ठीक बनी हुई है। सर, ये जो मेन है मैंने, क्योंकि ये सो जो आपने शुरू शुरू में करी थी उसी का पार्ट है ना सर, ये नीचे होगा। हाँ बिल्कुल 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 जी वही। जी, कल देखूंगा मैं, हाँ, देख। इसमें 2000 से ज्यादा स्लाइड है, ये ग्रुप पे शेयर की मैंने। हाँ है मेरे पास सर, मिल गया। हम्म। देखूंगा सर हाँ इसको। जी, जी ठीक है जी, तो आज यही वाइंड अप करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके। गुड ओके, गुड नाइट। नाइट।